है, इसका 3i है. Okay, this is A, this is B, and this is C. Okay, this is solve this problem using whatever method you know by now, how long will it take? If this is a quiz, something I ask you to do in the quiz right now, and using any method you know, how long should it take? How long will it take? Over 30 minutes? 30 minutes? More than 1 hour? more. 1.5? 16 or 16 hours? yes. Really? Okay, so we're going to learn a method today in which you can do this in 5 minutes. Literally 5 minutes. Okay? So it's just like a magic. पहले क्यों नहीं बताया? Yeah, this is something you can So let me show you that magic. Okay? अब मैं मैजिक का वर्ड वाला इसलिए क्यों यूज कर रहा हूँ कि मैंने इसकी जो बैकग्राउंड है ना उसको स्किप कर लिया. ठीक, इसलिए मैं मैजिक कर रहा हूँ. अदरवाइज इट्स अ वेरी डिफाइंड मैथड. ठीक है, सो आज हम मैजिक भी सीख सकते हैं उसको. ठीक, जी मैजिक का मतलब है आपको ये नहीं पता ये किधर से हो रहा है, क्यों आप कर रहे हैं, बैकग्राउंड क्या है आपको नहीं पता. आप कहते हैं ये किया और ये हो गया, मुझे नहीं पता कैसे हो गया. ठीक, you just follow the steps and you get your results. And when I'm showing you that, it's not my usual way of teaching. This is just because of the constant effort. So, what if I consider both this A, B fully fixed? What if both ends fully fixed? Okay? What does that mean? If I consider it fully fixed, both ends, then this is the first step, by the way. What will be the moments at the end? W square by 12. समझाने में 5 मिनट नहीं लगाऊंगा, फिर आपको समझ नहीं आएगी. करने में आपको 5 मिनट लगेंगे. Just don't worry. Fixed end moments आपने किया हुआ है? Yes, sir. Yes, lot of work. Yes, in your register. Yes. Just pull your register, वो page जिसके ऊपर आपने वो किया हुआ है. What should be the moments? बताएं? At the end of WL square by 12 है. 12. WL square by 12. This is good to remember these results. WL square by 12. These are the directions. I hope you remember them. Okay? So, can you calculate this? WL square by 12 would be, you're doing it like that. 30 into this is, 3 meters. 3 squared by 12. What's the answer? I hope you got calculators. Okay? 22 marks. So 22.5 on both sides with the directions. Let's see over here. Okay? Now, and similarly, about the BC span, this was AB. Fixed end moments for AB span. Now fixed end moments for the BC span. Do you see any load on it? No. And there is no settlement, and as I mentioned it, so there is no settlement anywhere. So if there is no load and self-weight is neglected, then what should be the end moments? 0. 0. There is no load, there is no settlement, 0 moment. Okay, at the end, if this were fully fixed at both ends. So these are 0. Okay, clear? This first step is clear. Yes. Now we're going to assume something. Use a sign convention. One way is that you keep on writing the magnitude and direction every time, and the other way is to use a sign convention and just use the number with an algebraic sign. Okay? So we're going to follow. Yes. We're going to follow this sign convention. We are going to assume, I shouldn't say assume, we're going to say that all
end moments which are in counterclockwise direction would be considered positive. Getting it? The actual directions may be, different. Of course, they're going to be different, but we're going to consider one direction positive. And we're going to choose, as per this book, counterclockwise direction positive. Most of the other books use clockwise positive, but this book uses counterclockwise positive. So let's stick to that. Counterclockwise positive. And if this is A and this is B, we would say this is MAB fixed. And this is, I'm sorry, we should call this as MBA fixed, and this would be called as MAB fixed. Okay, this is AB. So basically it's MA and this is MB. The shorter names are MA and MB, but there is a reason for which I'm adding the other subscript. Okay, this is MA and this is MB. If this was just one span, you would simply use MA and MB, but we've got another span, for example, the other one, this span, this B and this is C. Now, if I call this as MB, this is also MB, then there would be no way to differentiate between these two. So I'm going to use the other substrate to tell that this is a part of AB, this is on this memory. MB, A means MB for this memory. Getting it? And so again, these are the sign conventions. This is CB fixed, and this would be MBC fixed. Now, if I tell you what are the values for these, you could say MAB fixed is equal to this. This is actually 22.5 kilometer meter, and these are zeros. Okay? Now you just have to do a simple job. This is MAB fixed as per the sign convention, and the sign convention is counterclockwise. This is also counterclockwise, so you would say this is positive. I'm going to write a plus sign to reinforce that this could be a negative number, the negative sign. 22.5 kilometer meter, and then MBA fixed is the same magnitude, but an opposite direction to what we consider positive. So this is minus 22.5 kilometer meter. Okay, this is fine. No problem up to this point. And then we know it is MBC fixed equal to 0 and MCB fixed equal to 0. So this was the first thing to do. Fix end moments. Calculate the end moments assuming both ends fixed. So you have done the fixed end moments. This is the first step. Okay. Step number 1, fixed end moments. Clear? Now the next thing is, we'll come back to these fixed end moments. We need these fixed end moments in our calculation, so we've done them before. So we'll return to these numbers again, but in the meantime, what we need to do is, the step is called as calculating the distribution factor. DFs. Distribution factors. Okay? We will always calculate. So what are distribution factors? We'll get to know. Once we use them in the example, we'll get to know what these factors actually mean. Distribution factors. So we will always calculate them joint by joint. What does that mean? We will have to calculate for each joint the distribution factors. Okay? For each unrestrained joint. In this case, this B is the only end unrestrained. Okay, what I mean by unrestrained? The rotation is not restrained at all. Okay, when I say unrestrained means theta at that joint is not 0. And okay, for now I'm just writing this as it is, but I'll give an explainer at the end. Okay, so this volume unrestrained means that the rotation at this end, rotation at that joint is not restrained. It is free to happen. Okay? Anyways,
So we've got only one unrestrained joint in this problem, where is joint B. Okay, so let's come to joint B. At joint B, we have got two members connected, two segments connected, BA and BC. Okay, so for each one of them, BA and BC, we're going to calculate the distribution factors. Okay. So let's see how we do it. What is the distribution factor now? Distribution factor will be calculated for each member connected at that joint will be calculated as, I'm using a sample K, I'll explain what it is. K for that member. So this is the distribution factor for a member will be equal to K for that member divided by sum of all K's. Sum of all K's. So sum of K's for all members. So there are two members, there are sum of the K's for the two members in the denominator. Okay? Now df for, so this is the base formula. Now what is K? K is basically I over L. Okay? I over L. Moment of inertia over the span of that member, the length of that member. Okay? Now let's do it for, so we need to calculate this thing. So let's do it in advance. Okay, let's do this first. Summation of K for all members. So K for, or maybe you could do it step by step. Maybe you could say K for BA is equal to, look at this. This is BA. Okay, it's BA. So this is the, so what is this I? We have represented its moment of inertia as I. This I is I. I is the general term. This is a placeholder, and this is the sample we are using for the I of this member. In this case, it is the same I divided by, what is the length of BA member? 3 meter. Okay. And what is K for BC? The other member is BC. Look, I'm not saying it A, B, and C. So the members are BA and BC connected at the joint B. Okay? Pay attention to this. I'm not saying AB. AB is connected to this fixed joint. So we're not talking about this joint. We're talking about this joint. BA and BC are connected there. So KBC is, what is the moment of inertia for this member? 3 times I. So we would say this is 3I over, what is its length? 6 meters. Okay. Now you have got the KBA and KBC. Now you can start calculating the DFs. Okay. So DF for member BA would be equal to K of BA divided by K of BA plus K of BC. Simple? So it is equal to, so how about just doing this thing first? K, summation of K's would be I by 3 plus 3I by 6. So it's basically 1 over 3 plus 1 over 2. What's the answer? 1 over 3 plus 1 over 2. What is the answer? 5 by 6? Yes. Okay, so 5 by 6. Now, this will be equal to 5 by 6 times I. Okay? Now, KBA is I by 3. Okay? So I divided by 3, okay, divided by the summations, which is इसलिए मैंने पहले से कर ली ताकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी expression तो ना करनी करना पड़े. 5I over 6, and I will get cancelled out, and what should you be left with? I by 3 divided by I by 6. What's the answer? 2 by 2. 2 by 2.
2 by 5. Okay, this is 2 by 5. Well, distribution factor will always be just a number without any units because it is just a ratio of two similar things. Okay, you're getting basically 2 by 5 means in fraction it will be 0.4. Is it so? So BF BC is equal to KBC divided by, again, the summation. So this time we're dealing with KBC, so 3i by 6 divided by 5i by 6. So what is the answer now? You should get 0.6. I'll tell you how I guess it, but do the calculations, please. Sorry? 3 by 5? Yes. Which is 0.6. How I guess it? It should be 0.6. The principle is that the sum of all df's at a joint should be equal to 1. Okay, that's the principle. So, well, the best way to do is the way we have done it. This principle you should use just to confirm that you have done the calculation all right. If you do your calculations for 0.4 and the other one you calculate is as 1 minus 0.4 equal to 0.6, you see, if this was wrong, this is also going to be wrong. So not using the principle to validate your answer, you're using it to speed up your calculations. Okay? So let's not speed up. Let's use it to validate. Let's make sure that you're doing it right. Okay? Now, you can write a hint over here, maybe df for df, summation df should be equal to 1 for all the members at that joint. Okay, we've got 2 members at P, so the df for the 2 members is 1. Okay, we're done with this part. Now the best way to do the rest of the calculations is to make a table. Okay, make a table, simple table, and just list down the things that you calculate. Member, and then we have got just one joint, but let me just write it down. What's the best way of doing this? Got B joint, and under B we got 2 members connected. Maybe I could write it down like that. This is B, and under B we got 2 members. Let me do it again. This is the best way to show is show the B joint, and on the left side is BA, so you show the BA on the left. Okay, this helps make things easy to understand. BA and BC. Okay. Alright, let's write all the joints. I'm sorry for that. Let's write all the joints. So maybe I could say joint over here. We've got A, B, and then C. Koi baat nahi, very careful. If you're not making mistakes, you're not thinking deep enough. AB, BA, BC, and CB. These are the members, but make sure that the members are it is clearly possible to see which member is connected to which joint. Okay, so this is A member, A joint, just one member, AB. This is B, and we've got 2 members, BA and BC over here. And this is C joint, and we have got just one member, CB. Okay, now the next thing we need to show is fixed end moments, FENs. Now, this is the reason we did this calculation in advance. Oh, before you do the FENs, I'm really sorry for this. You just rub it again, and then we need to write DFs first. Okay? DFs. DFs for which? Members. For the members connected at the unrestrained joint. We've got how many unrestrained joints? 1. Which one is unrestrained? B.
This is the unrestrained joint. For these two members, you have to write down distribution factors. Okay? For members which are connected to restrained joint, there is no need to do any distribution factor calculation. Okay? You will see why. Now this was 0.4 and this is 0.6. Okay? Next is FEM. Yeah, I'm just going to change the color. Oh, I'm sorry, this will be FEMs. Now, FEMs are also done already. Just need to put them right here. Okay? AB fixed 22.5 with a positive sign. So for AB, I will list down plus 22.5. And then for BA, this is the answer, minus 22.5. Okay? Oh, that's fine. And BC fixed, what's the value? 0. And for CB fixed, it is 0. So this calculation was just, something we need in the table. Okay? और ये प्रॉब्लम में दे नहीं देना होता है एग्जाम में इसको चेक करना बहुत आसान you don't have to search for the answer just look for the table everything is right there okay ये वाला सवाल इसको चेक करना बहुत आसान है so I always love to give this kind of problem in the exam okay सबसे आसान होता है इसको चेक करना वो इक्वेशन तो बड़ा कोएफिशिएंट्स को ढूंढ के ना मुश्किल काम होता है so this is the टॉपिक का नाम नहीं बात आपने नाम क्या कर रहे हैं yes. नाम लिखो मैं नाम में क्या रखा है नाम सर पेपर में देंगे तब भी यही कीजिएगा मैजिक ओके that's a good idea magic method okay all right so what is the next step ये अभी जो कर रहे हैं अभी आप मैजिक देखेंगे what is the next thing we need to do जब आप सॉल्व करते थे मल्टीस्पैन भी को सॉल्व कर लेते थे तो एट द एंड आपके पास जब रिजल्ट आता था तो आपको पता होता था कि जब मैं सेगमेंट्स को ड्रॉ करूंगा अगर आपने किया होगा तो आप रिलेट कर सकते हैं अगर नहीं किया तो फिर आप सुन नहीं सकते हैं अगर आप मेंबर्स को कर लेते ना एक मेंबर दूसरा मेंबर जब आपकी रिजल्ट्स आ जाते थे जो मैंने एग्जाम में प्रॉब्लम दिया तो मैं उसके रेफरेंस से बात कर रहा हूँ या वैसे भी आपने अगर कोई मल्टीस्पैन प्रॉब्लम इंटरनल मोमेंट को रेडियन लेके किया हुआ तो आप क्या कर लेते थे एंड में हर स्पैन को ड्रॉ करके एंड मोमेंट शो कर लेते थे तो अगर आप इस स्पैन इसको कर रहे होते उस मेथड से और एंड में रिजल्ट निकलते तो इस तरह के रिजल्ट निकलते ये और आप ये यूनिट शो करना था आपने और यहाँ इस केस में आपको इधर भी शायद मोमेंट पता लग जाता है लेकिन आप यहाँ पे कुछ मोमेंट शो कर रहे होते हैं ना एंड में ये वाला मोमेंट और ये वाला मोमेंट मैग्नीट्यूड वाइज सेम एग्री ये आप एक ही मैग्नीट्यूड लिखते भी नहीं दोबारा ऐसे ही ना आपको पता है ये हैव टू बी सेम एक जॉइंट के समेशन ऑफ मोमेंट्स शुड बी सेम अपोजिट डायरेक्शन में होंगे यानी अगर हम एक क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मान लें तो एक काउंटर क्लॉकवाइज होगा एक क्लॉकवाइज होगा मैग्नीट्यूड वाइज सेम साइंस डायरेक्शंस अपोजिट इस प्रिंसिपल को यहां पर हमने किसी तरह से सेटिस्फाई करना है इस प्रिंसिपल अब पहले चेक करते हैं ये सेटिस्फाइड है ठीक है और अगर नहीं है सेटिस्फाइड तो हमें करना है इसको ओके यहां पर इस बी मेंबर को द बी जॉइंट को देखें जहां में दो मेंबर्स कनेक्ट हो रहे थे इसका सब इस वक्त क्या नजर आ रहा है आपको एक -22.5 और एक 0 है इसका मतलब ये एंड रिजल्ट फाइनल रिजल्ट अगर इसको मान लीजिए तो ये तो गलत है समेशन इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल और साइंस अपोजिट हों एंड में आ जाए तो वो ठीक हो सकता है कि हम माने कि हाँ ये सही है ये सही लग रहा है ठीक है सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इसका सम 0 होना था आप सम फाइंड कर लें ये स्टेप्स की तरतीब देखो सम व्हाट इज द सम -22.5 what is the next step change the sign so you get 22.5
divide, change the sign, but that's something we can't do. We can't afford to do right now. Change the sign, next step, next thing. And then you distribute it. Okay? Distribute to what? BA and BC connected at their joint. Okay? So, and how will you distribute? 22.5 को distribute करना है BA और BC में, और BA का distribution factor का है 0.4 और उसका का 0.6, तो BA को देंगे 0.4 times 22.5 और इसको देंगे 0.6 times 22.5. Right now the sum is not 0, so you got to do something to make the sum ultimately 0. Okay? So this is the thing to do. Sum, change the sign, distribute according to distribution factors. And there is one more thing that we need to do, but let me first do this part. The sum is minus 22.5. Change the sign, 22.5. अगर For fourth time, what is this answer? 9. And what is this? Comments? 13.5. 13.5. This, of course, these two should sum up to give you that 32.5. उसी को आपने distribute करके दो बंदों को, दो members को दे दिया ना? तो जाहिर है कि sum नहीं होना चाहिए जितना कि original था आपके पास. So you will just write down that word here, 9 and 13.5. Okay, there is one more step we need to do, and that is called carry over. Carry over. ये भी लिखना. Carry over. Carry over. इस particular case में carry over का दो ही cases हो सकते हैं carry over. अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो उस केस में कैरी ओवर का ये मतलब है, ये बी ए है ना, तो ए बी को कैरी ओवर जाएगा, यानी आप सिंपल ये याद रखें, बी ए का कैरी ओवर ए बी को जाएगा, एक्स वाई का कैरी ओवर वाई एक्स को जाएगा, पी क्यू कैरी ओवर क्यू बी को जाएगा. यानी ये ठीक है, आज कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट मैजिक. 4.5 सेम साइन और उसको हाफ कर लिया, मैंने हाफ कैरी ओवर किया, मैंने हाफ. ओके, और ये मैंने BC इसको कैरी ओवर किधर करूंगा, CB को, और हाफ कैरी ओवर कैरी करूंगा. हाफ कितना हो जाएगा इसका? 6.75. ओके, नाउ सी द मैट्रिक्स. Let's sum this up. 22.5 and 4.5 make 27. Okay. What about this? 13.5 with a positive sign. And this is with a negative sign, I'm sorry. With a negative sign. And this is 13.5 with a positive sign. And this is 6.75. Done with the end moments. You've got your end moments. Isn't it magic? तो इसका तो ये मतलब हुआ कि हम किसी भी जॉइंट पे अगर ज्यादा लोड आ रहा है तो उसे दूसरे पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. अगर आप कॉन्सेप्ट टू बी वेरी क्लियर, अगर आप इससे कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं ना, तो नहीं समझ सकते. सो डोंट ट्राई, ठीक है, नहीं समझ. मैं सिंपल कह रहा हूँ, नहीं समझ, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया ही नहीं आज. आज तक टारगेट जब आपको पता हो ना कि आज मैंने कॉन्सेप्ट नहीं समझना, तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी ना. यस सर. आज जस्ट लर्न द मैथड. मैजिक सीखना है आपके पास कि उसको करना कैसे. जब इसलिए मैं आप स्टेप गिनवा रहा हूँ ना, नॉर्मली मैं स्टेप तक नहीं, ये मतलब फ्लो में जो भी चल रहा है, मैं कॉन्सेप्ट पर कहानी सुना चुका होता हूँ. आज मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ. FEM स्टेप नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स. नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, जस्ट लिस्ट डाउन द डेटा, और फिर ये स्टेप्स फिगर आउट द एडजस्टमेंट पॉइंट. उस एडजस्टमेंट पॉइंट में मेंबर्स जो कनेक्टेड हैं उनका फिक्स एंड मोमेंट्स का सम, चेंज द साइन, डिस्ट्रीब्यूट, कैरी. डन. 4 steps. क्लियर हो गया? दिस इज क्लियर. सही मोमेंट्स आ गए ना आपके पास? ये वहाँ पे हिंज था हमारे पास, तो हिंज पे मोमेंट्स कैसे आ गए? आपके पास आए हुए कोरोनल स्टैटिक साइन में क्यों कर दिया आपने? जब सॉल्व किया हुआ गॉट डी ऑफ एंड मोमेंट्स आए हुए ना. किधर से आए हैं? किधर से आए भाई? या ये आज ये
लेकिन इसकी बात कॉन्सेप्ट की बेस पे कर रहा हूँ। किधर से आए हैं वो मोमेंट्स? आए हैं ना आपके पास? कंटिन्यूअस बीइंग, मल्टीप्लाइंग बीइंग, एंड वाले रोलर्स के ऊपर आए ना मोमेंट्स? किधर से आए हैं? Continuity brings fixity. Simple. Continue. अगर ये यहाँ खत्म हो रहा होगा नहीं, zero होगा. Continuity is going to bring fixity. Simple. अगर वही roller या pin end में आ जाए, then yes, zero moment. So let me show you a problem. उससे कि अगर end में roller आ जाए, मैं इसी को roller कर देता हूँ. इसी को roller कर देते हैं. यहाँ पे समझ आ गया? अच्छा, इससे आगे स्टेप्स में नहीं कर रहा हूँ. I hope you know that. एंड मोमेंट्स आ गए, एंड शीयर लिखा दोगे, शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आ गया. ये वाली कहानी पुरानी है. ये आप 3 मोमेंट इक्वेशन भी पढ़ चुके थे. इसे में फोर्स मेथड भी हमने आपने किया होगा. अगर आपने किया है तो बल्कि स्पैन बीम को इंटरनल मोमेंट्स को रिलेटेड लेके ठीक हो गया. सो अगर नाउ प्लीज लिसन नाउ, अगर प्रॉब्लम में सुनो, अगर प्रॉब्लम में एंड के ऊपर कोई पिन सपोर्ट या रोलर सपोर्ट आ जाए, जिसको हम कहेंगे एंड पिन या एंड रोलर. इफ यू सी एन एंड रोलर और एंड वहां पे खत्म हो रही हो आपका स्ट्रक्चर उस सपोर्ट के ऊपर या वो रोलर के ऊपर या पिन के ऊपर, तो उस मोमेंट क्या होता है? जीरो. यू नो दैट. ओके, तो उसकी बेस पे देयर आर 3 मॉडिफिकेशंस यू नीड टू डू. इस स्टेप से 3 मॉडिफिकेशंस होंगी डिफरेंट फॉर दैट पर्टिकुलर मेंबर. अभी देखो किसके नहीं कर रहे, बट दिस इज द प्रॉब्लम वी नीड टू अंडरस्टैंड. अगर यहां पे हिंज होती, सॉरी आईएस नहीं होती, then what changes we need to do? First change, ये मैंने टेबल 9.1 से उठाया है जिसमें बोथ एंड्स फिक्स्ड हैं. ठीक. Let me see if this is the right problem to discuss. मैं चाह रहा हूँ केस कवर हो जाए. अच्छा, हम इधर ले लेते हैं. उससे वजह है कि यहाँ पे तो लोड है ही नहीं ना, तो वो आप कहेंगे फर्क ही नहीं पड़ना. पहले भी 0 आ रही थी, तो मैं इसको फिक्स नहीं देता हूँ और मैं इसको पिन कर रहा हूँ. ओके, इसको पिन कर रहा हूँ. ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए पिन आगे तो क्या करना है ना. ये रिजल्ट मैंने 9.1 से लिए थे बोथ एंड फिक्स से. अब मेरे पास ये केस है, मुझे पता है भाई यहाँ पे 0 मोमेंट आने ही आना है, तो मैं क्यों उसको फिक्स कंसीडर करके फिर इतने सारे वो तरीका होता है लेकिन बहुत लंबा हो जाता है. सो तो आज तो मैजिक सीखना है ना, लंबे मेथड में नहीं जाना. सो यू जस्ट नीड टू कंसीडर इट एज इट इज. ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि अब आप इस मेंबर के लिए जब फिक्स एंड मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे तो टेबल 9.1 से नहीं उठाएंगे, टेबल 9.2 से उठाएंगे. उसमें क्या आपका, अब आपने टेबल 9.2 तो देखा हुआ है. यस सर. आई होप आपने देखा होगा. अब बाय द वे आपको मैंने डिराइव करने का इसलिए कहा था इसको, आपको पता हो कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे. यस सर. So if this is pin, this is going to be 0 and this is going to be a different number. WL square by 8. Okay, so this is WL square by 8 in that case. ठीक है, WL square by 8 हो जाएगा ये. So मैं ये WL square by 12 लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. This is WL square by 8. What is the answer now? आंसर बताओ. अच्छा, एक चीज मैंने पिछले में नहीं बताया. अभी इस प्रॉब्लम का देखो, हमने इसको आगे सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं करने कैसे. तो ये दोनों थे ना ए बी बी सी, ऐसे थे ना ये. ठीक, अब अपने यहाँ सपोर्ट नहीं मिल जाएगा क्योंकि एंड शीयर इज बेटर इसके लिए वर्ड. ठीक है, वो रिएक्शन डजंट रियली साउंड गुड फॉर दिस. ये इंटरनल फोर्स होती है बेसिकली. यहाँ पे जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर जॉइंट्स कट लगाया. ठीक, तो आप इसको एंड शीयर कहा करोगे. रिएक्शन की तरह ही फाइंड होता है लेकिन एंड शीयर कहा करोगे. ओके, सो ये एंड मोमेंट कैसे शो होंगे? प्लस ये आंसर क्या है? 27 प्लस 27. यहाँ मैंने शो करना था इसको. प्लस 27 क्या शो करूँ इसको? काउंटर क्लॉकवाइज. जो साइन कन्वेंशन हो गया. और ये माइनस 13.5 है,
तो इसको कैसे करूंगा क्लॉकवाइज प्लस 13.5 counter clockwise 6.75 counter clockwise अब आप NCS निकालें और आगे कहानी का बताइए ठीक हो गया यस सर come back to the problem with a hinge at this end A okay this the first thing you need to do is इस particular part के लिए अगर यहाँ पे लोडिंग होती है यहाँ पे समझ रहे हैं अगर लोडिंग होगी उसको हम इसी तरह करते हैं या ये तो पिन नहीं है ना उसको उसी तरह टेबल 9.1 से पिक करते हैं ये वाला मैं टेबल 9.2 से पिक कर रहा हूँ ठीक है इस पर्टिकुलर केस में बिकॉज उस टेबल में आपको ये केस मिलेगा तो आपको ये वाला कैलकुलेट करते हैं 0 है टेबल इसके पाई रिवर्स सैमसन 33.7 ओके ये साइन डिमेंशन वही रहेगा उसी को फॉलो करते हैं ओके तो MAB फिक्स 0 अच्छा इस MBA फिक्स ये आप ये नाम रखना चाहे रख सकते हैं लेकिन हम इसके साथ एक वर्ड यूज करेंगे मॉडिफाइड मॉडिफाइड का मतलब है कि हमने 9.1 से उठाया है इसलिए ये ताकि पता चले ना कि हम कहां से उठा रहे हैं सो दिस इज माइनस 33.7 माइनस क्यों लगा रहा हूं इस डायरेक्शन की वजह से ये काउंटर क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज है इस वजह से नाउ MBC फिक्स स्टिल 0 देयर इज नो लोड ऑन इट अगर लोड होता तो हम टेबल 9.1 से उठा देंगे बोथ एंड फिक्स वाले केस लेकिन नहीं है 0 दैट्स इट एक चीज ये क्लियर होगी फर्स्ट चेंज फिक्स्ड मोमेंट्स में उस पर्टिकुलर मेंबर के लिए जिसका वो एंड में पिन है या रोलर है नेक्स्ट थिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में चेंज आएगा वो चेंज उधर ही आएगा उसी मेंबर के लिए किस मेंबर के लिए चेंज आएगा दो मेंबर्स कनेक्टेड है यहां पे कौन-कौन से BA और BC चेंज किसमें आना है दिस मेंबर का एंड जो है वो एक एंड पिन या एक एंड रोलर है BA का एंड पिन है एंड रोलर है ना एंड पिन है इसमें तो उसमें चेंज आएगी क्या चेंज आएगी मेंशन हियर फार्मूला यही रहेंगे फार्मूला यही है तो उसकी सिर्फ k की वैल्यू में हम एक चेंज लेके आएंगे क्या चेंज लेके आएंगे हमने कहा हमने ऐसे कैलकुलेट किया KBA पहले हमने ऐसे किया I over L KBC को I over जिस मेंबर के एंड में पिन या रोलर आया होगा उसके I over L ही लिखेंगे लेकिन साथ में मॉडिफिकेशन फैक्टर आएगा 3/4 का अगर आपको ये लिखने की जरूरत है तो आप जिस जुबान में लिखना चाहें लिख लें वॉइस को जो मर्जी रिकॉर्ड करना चाहें लिख लें ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग सबसे मुश्किल या नॉर्मल तो नहीं कहना ज्यादा मसला यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट किसको मॉडिफाई करना है किसका के मॉडिफाई करना है मैं यहाँ आके बोल रहा हूँ यहाँ जैसे इधर से सुन लेना ठीक किसका के मॉडिफाई करना है आपने ठीक है जाहिर है हम उस जॉइंट पे होंगे जो अनरिस्ट्रेन्ड होगा उस पे जितने मेंबर्स कनेक्टेड होंगे उनके उसको कहेंगे फार एंड्स इसका फार एंड पिन था जिस मेंबर का फार एंड पिन है वो एंड पिन है या एंड रोलर है उसके के की वैल्यू के साथ एक फैक्टर लगेगा मॉडिफिकेशन फैक्टर क्लियर एंड दैट मॉडिफिकेशन फैक्टर आई एम गेसिंग इट इज 3/4 let me just make a quick confirmation yes it is 3/4 ठीक हो गया इसका I over L वही I/3 हो जाएगा बाकी what is the answer now I/4 और K BC 3I/6 which means I/2 if you like to say so now what is KBA plus KBC I/1/4 plus 1/2 answer 5 3/4 यानी चेक कर लो यार मुझे मैथ थोड़ी ठीक है three by four 3I/4 ठीक है ये सम कैलकुलेट हो गया अब बाकी DF BA would be
KBA is I by 4 divided by 3I by 4. What is the answer? 1/3. Okay. And DF for BC would be 3I, I'm sorry, I by 2 divided by 3I by 4, which is 2 by 3. 2 by 3, 1 by 3 and 2 by 3, okay? So what is going to change? 2 by, so this will be 1 by 3 and this will be 2 by 3 and sum is again 1. दो changes हो गई अभी तक. First change, friction moment from table 9.1 for that member जिसके लिए जिसका आखिरी जो सपोर्ट है वो एन पिन या एक रोल या एन पिन है या एम रोलर है. क्लियर? सेकंड चेंज क्या की? के के अंदर मॉडिफिकेशन फैक्टर उस मेंबर के लिए लगा दिया. दो चेंजेस. अब थर्ड चेंज देखो कहां पे आ रही है. ये मैं टेबल को अपडेट कर दूं पहले. So FEMs are 0 minus 33.700. सम करो कितना बनेगा? सेम स्टेप्स. 33.7 minus 33.7. Change the sign. 33.7. Distribute. 1 by 3. 2 by 3. What is the answer? 22.5 million. 33.7. This is also 33.7. What is the answer now? 11.2 and what is the answer? 22.4. Okay. So this is 11.2 and this is 22.4. Carry over step आ गया. This is the third, तीसरी जगह जहाँ चेंज आएगा. Carry over. Last time हमने इधर भी carry over किया, इधर भी carry over किया. ऐसे ही है. इधर भी उसी तरह usual level carry over करेंगे. 11.2 half. ठीक है, मैं लिख रहा हूँ carry over कर रहा हूँ half. यहाँ पर no carry over. मैं लिख रहा हूँ no carry over. CO carry over. यहाँ पे हमने 0 रखा था ना FEM 0 और हमें पता है एंड में इसका रिजल्ट 0 ही बनना चाहिए. तो अगर हम यहाँ पे कुछ कैरी ओवर करेंगे तो फाइनल आंसर कितना बनेगा? 0. ओके? यस सर. कैरी ओवर नहीं आएगा इसको. बस कोई एंट्री नहीं आएगी यहाँ पे. सिंपल. 0 कैरी ओवर भी 0 और अब आप सम अप करेंगे तो क्या आंसर बनेंगे? 0. व्हाट इज द आंसर नाउ? 22.5 minus by the minus sign 32.4. ये आपने इसलिए किया था 11.2 और 22.4 का जो सम था वो 33.6 बन रहा था. उस एरर की वजह से ये एरर आ रहा है 22.4. अदरवाइज अगर इस तरह के डिफरेंस हो तो आप दोनों का एवरेज ले लें. यानी इसको भी minus 22.5 भी आ रहा है. जो भी है 4.5 और 4.5 करके जो भी बनते हैं ठीक इस तरह करें. ये थोड़ा सा इसमें आ जाता है इस वजह से राउंडिंग ऑफ. These are the answers once again. End moments. The next story आपको पता है नेक्स्ट स्टेप. ठीक हो गया? अब आपने प्रैक्टिस के लिए मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा वो देख लीजिएगा. ठीक है. बाकी मुबशिर अंदर से पता क्या क्या सोच रहे हैं तो हमारे पास